हाय, आई एम कुशांक अरोरा एंड आई विल टेक दिस सेशन। इसमें मैं बहुत सारा प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा सी के बारे में बताऊंगा। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कैपेबिलिटीज ऑफ सी यू कैन स्किप दिस सेशन, बट इट इज अ मस्ट if you are a toddler in programming and want to know that why are you learning C. This session may also give you a reason to learn C. So our first topic would be what is programming and why programming. अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि भाई ये काम है कर दो। देन टेक्निकल हेड एक प्रॉपर प्रोसीजर लिखता है कि वो काम कैसे होगा और उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करता है ताकि जो काम मैंने बोला है वो हो जाए। एंड एट लास्ट बॉस द टास्क इज डन। सो नाउ यहाँ प्रोग्रामिंग कहाँ आई? प्रोग्रामिंग नहीं थी इस एग्जाम्पल में क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का रोल नहीं था। अगर यही काम मुझे कंप्यूटर से करवाना होता तो सिचुएशन कैसी होती? देखो, वापस से बॉस बोलता काम करने को, बट नाउ द टेक्निकल हेड वुड आस्क द असिस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को बोलेगा कंप्यूटर यू डू दिस, बट इट इज अ कंप्यूटर। उसने अपनी भाषा में रिप्लाई किया एंड व्हाट इज दैट? समथिंग गार्बेज टू द टेक्निकल हेड। बट टेक्निकल हेड ट्राइज अगेन कि भाई क्या पता अब हो जाए। दोबारा बोला कंप्यूटर यू हैव टू डू दिस, बट द कंप्यूटर इज अगेन समथिंग गार्बेज। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? बॉस फायर्स द एम्प्लॉय। तो यहाँ आई प्रोग्रामिंग इज when you want a computer to do something for you and you can make him understand the task in the language of computer. मतलब कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बात करना है इस प्रोग्राम में। लाइक दिस, आप कंप्यूटर को 01 की फॉर्म में बोलते हैं कि you have to do this and then the computer replies in the right manner and my task is done and again boss the task is done. And this is what programming is. You have to make the computer understand that what you need to do. So according to Wikipedia also, computer programming is a process that leads from an original formulation of a computing problem to executable computer programs. It is a definition with too many heavy words, but we will try to understand it as we go forward in the session. Next topic is what is C. अभी हमने देखा कि प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में बात करनी होती है। तो कंप्यूटर की भाषा है क्या? इट इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ zeros and ones and that is called machine language and it is not easy क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि जीरो से क्या होता है और वन से क्या। Since it is not easy, so we got some tips who would help us and those are called assemblers. The language is called असेंबली लैंग्वेज। ये हमारी कंस्ट्रेंट इंग्लिश को 01 की फॉर्म में चेंज कर देगा। मतलब इफ आई वुड से समथिंग लाइक डू वर्क, द असेंबलर विल कन्वर्ट डू टू समथिंग ऑफ द फॉर्म 0101 and work to the form of 1010 and so on. The computer could understand this and so he replies in the right manner and हमारा काम हो गया। बट जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, असेंबलर की हेल्प से भी काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी, C++। वो असेंबलर से बहुत ईजी होती हैं, इसलिए अब वही यूज होती है। सो अभी तक का कंक्लूजन इज द लैंग्वेज क्लोजेस्ट टू कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज, दैट इज वन with zeros and one. Then we have low level languages called assembly language which uses mnemonics to talk with computer. And then we have high level languages like C, C++, Java, Python and so on. कुछ लोग C को middle level language भी बोलते हैं because you can do many low level tasks using C and even you can use many functionalities of high level language. So now we talk about C. What is C? C is a high level language used for programming. It is developed by Dennis Ritchie and that is the only history part of our whole course. The person in this slide is Dennis Ritchie. The next topic is why C. Earlier we talked about assembly language and the machine language. We have come forward from machine to assembly language and then to high level languages like C. And today there are many other languages in the market like C++, Java, Python and so on. Then why not to learn those languages directly rather than learning C? Because C माँ है।
I'm not joking. In computer field, we call C the mother of many languages because many languages have syntax common with C and has the potential to make you understand in depth of how does even a language work. Most of the compilers, JVMs, and kernels used today are written in C or C++. If you know C, it could be very easy for you to switch in any other language. C teaches you the basics which would be generally required in any other language. It is a language with the idea of write once, execute many. That is, write program once and execute it on all kinds of hardware. Even C is a top second language based on the TIOB index, which is a very good rank. And a more reason in favor of C is it is a very fast language. And another reason is the most important one is I also love C. Our next topic is possibilities in C. C and its derivatives have a monopoly on vast fields of programming. C में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ranging from programming embedded system to creating big languages to creating robots to games like GTA San Andreas and FIFA. You can use C everywhere, but our main concern will be what we will do in this session. भाई सी में बहुत कुछ कर सकते हैं. गेम्स बना लो, वेबसाइट्स बना लो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज बना लो, ये रोबोट का दिमाग बना लो. लेकिन हम इस कोर्स में क्या करेंगे मैटर करते हैं. हम इस कोर्स में इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे. So technically what we will do is stuff on black screen and that's all. To be more precise, we will write programs which will interact with the users based on a black screen through which they can give input and get the desired output. बाकी रही list of topics की बात that you can get below the video. Thanks for watching it.